तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे इस तरह का मैप एनिमेशन क्रिएट किया जाता है इनसाइड ऑफ आफ्टर इफेक्ट. So let's jump into the After Effects. Now we're in After Effects. So जैसे कि आप देखते हैं मेरे पास 3 PNG इमेज है. One is location and map and texture for background. So let's create a composition. Click this icon to create a composition and rename the comp. I'm also going to name it main. And dimension choose कीजिए according to you. So I'm going to 9020 into 1080 frame rate 30 fps, duration 10 second. Click OK and select this map PNG को select कीजिए, इसको drag कीजिए, इस icon पर छोड़िए. So it's create a composition according to image and go back to main comp and map comp को select कीजिए and drag कीजिए timeline पर. Let's enable this layer to 3D. So आपका 3D icon नहीं दिख रहा है तो toggle switch mode पर click कीजिए, you will get this option and select this map PNG and P press कीजिए आपका कीबोर्ड पर to bring position property and select this position, right click and separate dimension. So select this in Z position only and hold this Alt key and click this stopwatch icon and write here index in asterisk code. So इसको close करते हैं and select this map composition, इसको duplicate कीजिए 15 times. To duplicate this layer, hold Ctrl and press D 15 times. So let's create a camera. So go to layer and go to layer new camera, to node camera and 50 mm lens, 50 mm. Hit OK and select this camera 1. Click this right arrow पर click कीजिए and जो transform property है इसका click कीजिए right arrow to expand and select कीजिए point of interest and hold shift key and select this position. तो both layer को set कीजिए जैसे point of interest and position and click this top icon to add a keyframe and forward 5 seconds and click this keyframe to add a keyframe same position. So go back the first frame and go to this odd bit round cursor tool and इसको select करके इस तरह का इसको drag कीजिए नीचे की तरफ and go to this dolly cursor tool और इसको zoom कीजिए. So now we need a line. So इसके लिए हम लोग को पेन टूल पर जाना पड़ेगा. Go to pen tool and इसका जो fill कलर है none कीजिए, stroke कलर 5 पिक्सल पर रखिए and एक लाइन कीजिए इस तरह. So select this shape layer 1. So इसको हम लोग एनिमेट करेंगे. उसके लिए क्या करना होगा, select this shape layer 1, click this right arrow and let's add a trim path. Click this add icon and add a trim path and let's select this trim path 1, click this right arrow and select this and so we're going to animate this and value. So click this top icon to generate a keyframe. इसका जो value है 0 पर set कीजिए and forward 5 second. इसका जो value है 100 पर set कीजिए. both keyframe को select कीजिए, right click, keyframe assistant and erase. So हमारी एनिमेशन इस तरह के है अभी जैसे आप देख सकते हैं. तो गो टू सिलेक्शन टू. तो हमारी जो लाइन है देख रहा है आप, ये प्लेन है. हम लोग एक डैश क्रिएट करेंगे सो लुक बेटर. सो सिलेक्ट दिस shape layer 1, click this right arrow to expand and select this path 1, click this right arrow, select this stroke 1, click this right arrow and select the dashes. Click this plus icon to dash gap. देख रहे हैं आप. तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग डैश
आ गया है इसमें। सो हम लोग अभी क्या करना है, इसको जो हम लोग वो लोकेशन है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे टाइमलाइन पर। इसका जो स्केल है छोटा करेंगे, तो प्रेस कीबोर्ड पर एस प्रेस कीजिए टू ब्रिंग स्केल प्रॉपर्टी। इसको इसका जो स्केल है थोड़ा सा छोटा करेंगे, अराउंड 5 पिक्सल, और इसको ड्रैग करके यहाँ पर सेट कीजिए। एंड जो आगे का जो लेयर है जो दिख रहा है ना, प्लेट का आगे का जो लेयर, इसको ट्रिम करेंगे हम लोग। एंड सेलेक्ट दिस टेक्सचर एंड लेट्स ड्रैग टू टाइमलाइन। इसको पीछे भेजते हैं, तो होल्ड कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस स्क्वायर ब्रैकेट टू बिहाइंड। तो अभी इसको प्ले करते हैं, देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, दिस फाइनल रिजल्ट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।